Hello everyone. Today I will discuss about equipotential surface of various charges. After that, we will know about the relation between electric field and potential. First of all, we will know about equipotential surface of various charges. Dear students, as we know that what is equipotential surface? Any surface that has equal potential at every point on it is called equipotential surface. Any surface that has equal potential at every point on it is called equipotential surface. This surface may be surface of a body. This surface may be surface of a body or surface in space. Now, we take equipotential surface of a point charge. मीन्स पॉइंट चार्ज पर इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसा होगा, पॉइंट चार्ज पर इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसा होगा उसको हम लोग ड्रॉ करेंगे. तो फर्स्ट वी टेक पॉजिटिव चार्ज, आफ्टर दैट वी ड्रॉ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन. This is electric field line. Positive charges always produce radially outward. Now we will draw equipotential surface. Equipotential surface means equal potential. If the positive test charge placed be a point P, if the positive test charge be placed at a point P, the distance from O to P, suppose the distance from O to P is R. This test charge has potential V. Suppose this positive test charge has potential V. Also here we take same distance and positive test charge placed be a point. चारों तरफ मैंने डिस्टेंस इक्वल लिया है. मींस दिस टेस्ट चार्ज, दिस पॉजिटिव टेस्ट चार्ज अगर यह V वोल्ट एक्सपीरियंस करता है, अगर यह V वोल्ट इसके पास है, इस टेस्ट चार्ज के पास भी V वोल्ट होगा, इस टेस्ट चार्ज के पास भी V वोल्ट होगा, इस टेस्ट चार्ज के पास भी V वोल्ट होगा. नाउ ड्रॉ दिस पॉइंट. दिस इज equipotential surface of a point charge. अगर हम लोग पॉइंट यहां लेते हैं और प्लस टेस्ट चार्ज को अगर यहां रख देते हैं तो जितना पोटेंशियल ये एक्सपीरियंस करेगा उतना ही डिस्टेंस पर यह भी पोटेंशियल एक्सपीरियंस करेगा, उतने ही डिस्टेंस पर यह भी पोटेंशियल एक्सपीरियंस करेगा, उतना ही डिस्टेंस पर यह भी पोटेंशियल एक्सपीरियंस करेगा. दिस इज equipotential surface. Dear student, we see that electric field line, this one, कितना एंगल बना रहा है? 90 डिग्री, 90 डिग्री, 90 डिग्री, 90 डिग्री. Means electric field line is always normal to the equipotential surface at every point. Electric field is always normal to the equipotential surface at every point. This is equipotential surface because
every point has equal potential, because every point has equal potential, क्योंकि टेस्ट चार्ज को इतने डिस्टेंस पर यहाँ रखा है, उतने डिस्टेंस यहाँ है, उतना ही डिस्टेंस यहाँ है, उतना ही डिस्टेंस यहाँ है, इसलिए जितना इसके पास पोटेंशियल होगा उतना ही इसके पास होगा, उतना ही इसके पास होगा, उतना ही इसके पास होगा। इट्स क्लियर? नाउ नेक्स्ट इज number 2, equipotential surface of two equal means magnitude equal होना चाहिए, two equal and opposite charges, two equal and opposite charges. This is plus and this is minus, equal in magnitude but in opposite. We know that electric field begins from positive and ends on negative. Electric field begins from positive and ends on negative. We draw electric field lines. This is radially outward, radially inward. This is a electric field line between two equal and opposite charges. Now we will draw equipotential surface, means equal potential at every point. First we draw equipotential surface. We see that here distance is less and here distance is more. Same, here distance is less and here distance is more. How will this? Look, if a positive test charge Q0 be placed this point, Now this test charge experiences two type of force. This positive test charge experiences two type of force at this point. यह टेस्ट चार्ज इधर से यहाँ प्लस है, यहाँ से रिपल्सिव फोर्स एक्सपीरियंस करेगा. फोर्स किस तरफ लगेगा? दिस डायरेक्शन. और इस साइड नेगेटिव चार्जेस है और यह पॉजिटिव टेस्ट चार्ज अट्रैक्टिव फोर्स एक्सपीरियंस करेगा. मींस इस साइड दिस डायरेक्शन. दोनों ही डायरेक्शन सेम है. मींस सपोज दिस इज E1 and this is E2. Adding to each other means here electric field will be strong. Here electric field will be strong. Also potential will be more because effectiveness of electric field is called potential. जितना ज्यादा इफेक्टिवनेस होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का उतना ही ज्यादा क्या होगा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा. Here distance is more because there is no any charge. Because there is no any charge, no any force, means electric field will be weak. Also here electric field will be weak because here no any charge present
at any location. That's why we can say that here electric field is weak. Also, electric potential will be weak. इसलिए इधर डिस्टेंस कम है, इधर डिस्टेंस ज्यादा है, क्योंकि यहाँ स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मोर है, यहाँ स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मोर है. क्यों? दोनों का ही डायरेक्शन सेम है. नाउ थर्ड पॉइंट इज equipotential surface of two equal charges. Two equal charges means plus plus minus minus. This is plus and this is minus. Sorry, two equal charges plus. Plus plus maybe minus minus. First, we draw electric field line radially outward, radially outward. This is electric field line between two equal charges. Now we will draw equipotential surface, means equal potential. This is equipotential surface. Here we see that this side distance is less and this side distance is more. Also this side distance is less and this side distance is more. Why? Because if the positive test charge be placed at this point, this test charge will experiences two type of repulsive force. Two type of repulsive force. यहाँ पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखा है, इस चार्ज के कारण ये रिपेल करेगा, तो फोर्स की डायरेक्शन इस साइड होगी. यहाँ भी पॉजिटिव चार्ज है, यह भी इसको रिपेल करेगा, इसका डायरेक्शन इस साइड होगा. दोनों की डायरेक्शन क्या थी? क्या है? अपोजिट. मीन्स दोनों एक दूसरे को कैंसिल करेगा, कुछ वैल्यू उसकी डिक्रीज होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ डिक्रीज होगा, इफेक्टिवनेस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी डिक्रीज. इफ इफेक्टिवनेस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी डिक्रीज, देन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आल्सो विल बी डिक्रीज. दैट्स व्हाई हियर डिस्टेंस इज मोर, हियर डिस्टेंस इज मोर, बट here no any charge present at this location. This positive test charge no one experiences force. That's why here distance is less, here distance is less. अगर यहाँ टेस्ट चार्ज को हम लोग पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को रखते हैं,
यह सिर्फ रिपेल करेगा और कोई भी फोर्स एक्सपीरियंस इसमें नहीं होगा। तो यहाँ इफेक्टिवनेस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इंक्रीज होगा, इधर डिक्रीज होगा। नाउ फोर्स इज equipotential surface of a plane सबसे पहले हम लोग यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रॉ करते हैं और वह इलेक्ट्रिक फील्ड किसी सोर्स से आ रहा है। As we know that already, electric field begins from positive and non-negative. If the test charge plus Q naught be placed at this point, अगर हम लोग पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को इस पॉइंट पर कितने डिस्टेंस पर रखते हैं, यहां भी सेम डिस्टेंस पर रखते हैं, यहां भी सेम डिस्टेंस पर रखते हैं, यहां भी सेम डिस्टेंस पर रखते हैं, तो जितना यह टेस्ट चार्ज के पास पोटेंशियल यहां होगा उतना ही यहां होगा, उतना ही यहां होगा, उतना ही यहां होगा। We draw an area this is इक्विपोटेंशियल सरफेस। अगर डिस्टेंस को इंक्रीज कर देते हैं यहां, तो जितना यह पॉजिटिव टेस्ट चार्ज यह इसके पास पोटेंशियल होगा उतना ही डिस्टेंस पर यहां पोटेंशियल होगा, उतना ही पोटेंशियल यहां होगा, उतना ही पोटेंशियल यहां होगा। नाउ वी ड्रॉ an area this is equipotential surface. That's clear? Now next topic is relation between electric field and electric potential. Electric field and electric potential. Next topic is relation between electric field intensity and potential. Electric field denoted by E and electric potential denoted by V. Relation between electric field and potential. As we know that formula of E is equal to F upon Q and V is equal to KQ upon R. Let us consider there is a two closed equipotential surface A, B. This surface having potential V and this surface having potential V plus del V, change in potential. We take a point P having source charge plus Q and another point
Q. The displacement between P to Q is dl. The displacement between P to Q is dl. The electric field is this. This is the direction of electric field line. Now, if we positive test charge be placed at a point Q, this positive test charge experiences a repulsive force from this source charge. This test charge will experiences electrostatic repulsive force exerted by this source charge. If the positive test charge plus Q naught is moved from Q to P, this positive test charge Q naught is moved from Q to P against the electrostatic force, then work done will be what? Force into displacement. Force into displacement. Once again, if the positive test charge is moved from Q to P, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को यहां से मूव कराने के लिए क्या करना होगा? एक्सटर्नल फोर्स लगाना होगा। यह इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन है और इधर से फोर्स लगेगा किस पर? पॉजिटिव टेस्ट चार्ज पर। इफ द पॉजिटिव टेस्ट चार्ज इज मूव फ्रॉम Q to P against the electrostatic force, if the positive test charge Q naught is moved from Q to P against the force, then work done from Q to P is what? Work done is equal to force into displacement, or dW is equal to F dl cos theta. Here इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन डाउन से अप की तरफ है और पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को एक्सटर्नल फोर्स ला करके अप से डाउन लगाना। देन सिंस थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, और dW is equal to F dl cos 180 degree, और dW is equal to minus F into dl, और dW is equal to F. What is the value of F? E is equal to F upon Q. Then F is equal to E Q minus E Q naught into dl minus cos 180. The value of cos 180 is minus 1. This is equation 1. Now this positive test charge move from this point to this point. This positive test charge move from this point to this point. Then another formula is potential difference. Another formula is potential difference. Potential difference, the formula of potential difference is equal to V equal to W upon Q.
V is equal to W upon Q. पॉजिटिव फेस चार्ज Q से P आएगा, यह इसको एक वर्क डन करना होगा, देन वर्क डन इज इक्वल टू V इंटू Q. यहां से यहां तक इसका पोटेंशियल डिफरेंस मीन्स फाइनल माइनस इनिशियल. अगर पोटेंशियल डिफरेंस हम लोग निकालते हैं देन dW इज इक्वल टू V इंटू Q. And we know that dW is equal to change in potential into Q naught, because electric potential is equal to work done by charge, then work done equal to potential into charge. Here dW is equal to change in potential into phase charge, or dW is equal to final is V minus this one V plus delta V into Q naught. This is V plus and V minus cancel out, or dW is equal to del V into Q naught. Equation 2 from equation first and second. From equation first and second we get minus E Q naught into dL is equal to del V into Q naught. Q naught is cancelled out, or E is equal to minus del V by dl minus del V by dl. This is the relation between electric field and electric potential. The quantity del V by dl or dV by dl is the rate of change of potential with distance. The quantity dV by dl is the rate of change of electric potential with distance, and negative sign shows that work done is against the field. Work has to be done against the field. Once again, dV upon dl, the quantity dV upon dl is the rate of change of electric potential with distance, and negative sign indicates that this charge move against the field. This charge move against the field means work has to be done against the electric field. Thank you.